Dear student, I am already completed access specifier. Access specifier four types: public, protected, private, default. Now, uh, now I am explain accessibility of different types of access specifier. Accessibility of different types of access specifier. अच्छा different type of access specifier और accessibility आमे जानिले different access specifier accessibility कोड होबो कोटे क्लास रे हुए सब क्लास रे आ पैकेज रे आ अदर पैकेज ये चार्टारे आमर एक्चुअली accessibility access गोटे क्लास रो मेंबर अदर सब क्लास रे केमती access हबो ना पैकेज रे केमती access हबो अदर पैकेज रे केमती access हबो आमे एक्चुअली ये चार्टारे ही देखिबा accessibility ऑफ access स्पेयर मु ऑलरेडी तुम नोट बनै देछि देखो access ये नोट ही तुम बुझे दउछि access रे अछि तमरो पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट डिफॉल्ट दिस फोर आर व्हाट access specifier here heading is the class subclass package and other package now public already you are known public access specifier publicly declared होइतबो data member or method can be accessed anywhere that may be class or that may be subclass or package or other package so tick mark सबुठी रोची क्लास रे सब क्लास रे पैकेज रे एंड अदर पैकेज रे सो क्लास पब्लिकली इफ ए क्लास डिक्लेयर्ड using a special public then that member of class or method are access anywhere that may be class subclass package and other package this is completed your public access then protected class subclass package but other package रे हबो नै प्राइवेट ओनली क्लास से ही क्लास रे ही डिक्लेयर हबो सब क्लास रे पैकेज रे अदर पैकेज रे नुहे तो क्रॉस चिन्ह दिया जायछि डिफॉल्ट क्लास रे हबो सब क्लास रे पैकेज रे अदर पैकेज रे हबो नाही दिस इज कंप्लीटेड योर accessibility ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ access specifier देन देखो पिला माने बेसिक कांसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस बेसिक कांसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस व्हाट इज इनहेरिटेंस पिला माने आगो मन रखो इनहेरिटेंस इज ए कोन फीचर्स ऑफ oops फीचर्स ऑफ oops तुम जनी फीचर्स ऑफ oops होला वन हैला ऑब्जेक्ट फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज रे फर्स्ट फीचर होला ऑब्जेक्ट देन क्लास देन व्हाट एब्स्ट्रैक्शन फोर होची पॉलीमॉर्फिज्म देन what object class abstraction polymorphism then semti tumara another features is the inheritance is the features of oops basically आम ऑब्जेक्ट क्लास एथरे पढुचे बा इनहेरिटेंस कांसेप्ट टिके पढुचे हमर ई फंडामेंटल जाभा रे तेणु बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग because it allows reusing code without having to rewrite from scratch माने कोन आमे आउ थरे गोटे प्रोग्राम को न लिखिकी सेही प्रोग्राम रे केमती रीयूज करि परिबा गोटे कोड को आउ थरे केमती रीयूज करि परिबा बा गोटे क्लास रो डाटा मेंबर को आउ गोटे क्लास रे सेही प्रोग्राम रे केमती रीयूज करि परिबा दैट इज इनहेरिटेंस अर्थ होची रीयूज इनहेरिटेंस कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस वेयर वन क्लास एक्योर द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर गोटे क्लास रे अनदर क्लास रो प्रॉपर्टीज को हम एक्योर करि परिबा यूज करि परिबा है मेनसन कर अनदर क्लास गोटे पैकेज प्रॉपर्टीज को नु आम गोटे क्लास प्रॉपर्टीज को एक्योर कर अनदर क्लास रे दैट इज द कांसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस देन आम जी कांसेप्ट सुपर क्लास एंड सब क्लास और सब क्लास कौन ना सुपर क्लास सब क्लास रो एक्चुअली मीनिंग मु तुमको ये आगे बुझे दूची जदि गोटे सुपर क्लास रहिला सुपर क्लास रो प्रॉपर्टीज और मेथड आर प्रॉपर्टीज मेथड सब क्लास इनहेरिट कर परिबो
सब क्लास इनहेरिट कर तेणु यहाँ है सुपर क्लास को अदरवाइज कहुए बेस क्लास और पेरेंट क्लास और सुपर क्लास देन सब क्लास इज कॉल्ड अदरवाइज कॉल्ड एज चाइल्ड क्लास और व्हाट डिराइव्ड क्लास ऑल्सो सब क्लास इज डिराइव्ड क्लास और चाइल्ड क्लास तेणु आर प्रॉपर्टीज को ये इनहेरिट कर चाइल्ड कहीं कहला आपको पेरेंट कहला तेणु पेरेंटर जमी प्रॉपर्टीज गोटे चाइल्ड आने पेरेंटर बिहेवियर जमी गोटे चाइल्ड आने पेरेंटर क्यारेक्टरिस्टिक्स जमी गोटे चाइल्ड आने सेमती सुपर क्लास प्रॉपर्टीज सब क्लास रे डिस्क्राइब हो पाए तेणु ये देख सुपर क्लास सब क्लास है लिखिदे तुम इन जावा लैंग्वेज इनहेरिटेंस इज ए मेकानिज्म दैट अलाउज अस टू बिल्ड न्यू क्लास फ्रॉम एक्जिस्टिंग क्लास रु आम न्यू क्लास को बिल्ड कर परिबा यही कॉन्सेप्ट को कह जाए कौन तुम एक्चुअली इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट फ्रॉम एक्जिस्टिंग क्लास रु न्यू क्लास रु एक्जिस्टिंग क्लास को न्यू क्लास आनी परिबा एक्जिस्टिंग क्लास रु the old class is known as base class and new class base class or super class or parent class and new class को जो derived class child class or sub class this is your super class and sub class then super class रो concept रे super class कौन तार syntax कौन आम प्रोग्रामिंग केमी super class को नहीं लिखि पारे तार एग्जांपल ये देछि a super class is a class that has been extended to another class then super class रू आम another class को extend करि परिबा access specifier syntax है कौन ना access specifier ये access specifier जेको यूज कर पब्लिक प्रोटेक्टेड देन क्लास नेम तमर दिस इज द syntax कॉल बेसिस स्टार्ट एंड देन एग्जांपल पब्लिक क्लास access specifier पब्लिक क्लास लिखा है क्लास नेम सपोज नियाला पेरेंट दिस इज द एग्जांपल सुपर क्लास देन सब क्लास ए सब क्लास दैट डिराइव फ्रॉम अनदर क्लास बाय यूजिंग द कीवर्ड एक्सटेंड कीवर्ड यूज करा जाए कि आ गोटे क्लास को डिराइव करा जाई परिबो सुपर क्लास रु तेणु access specifier देन दिस इज द syntax access specifier क्लास सब क्लास नेम एक्सटेंड देन सुपर क्लास तेणु access specifier सेमति रहिला पब्लिक क्लास रहिला चाइल्ड गोटे क्लास नेम एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज होला पेरेंट तेणु एटा हला सुपर क्लास एटा हला सब क्लास दिस इज द कोन syntax और example of explaining subclass then jiba ame advantage of inheritance in 3 reusability save time and effort reliability what do you mean reusability ame jehetu ei concept re inheritance concept re ame reuse kari paruche one code को आउ थे reuse कर पारुचे आउ गोटे प्रोग्राम न लिखिकी दिस इज प्रॉपर्टीज ऑफ reusability then save time and effort जेमती आम सिंस द मेन कोड रिटर्न कैन बी रियूज इन भारियस सिचुएसन मेन कोडटा भारियस सिचुएसन रियूज हो पारुची मेन प्रोग्रामटा भारियस सिचुएसन रियूज हो पारुची तेणु आम सेव टाइम कर पारुचे रिलायबिलिटी प्रोग्राम जेहेतु आम सब मेंशन कर पारुचे तेणु रिलायबिलिटी मेंटेन हो पारुची गोटे प्रोग्राम इनक्रीज स्ट्रक्चर जब इनक्रीज होची आम ग्रेटर रिलायबिलिटी पाई पारुचे है ना तेना एक्सटेंड कीवर्ड देछि नोट एक्सटेंड कीवर्डटा यूज होची तमरो एक्चुअली मेंशन करुँची प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर क्लास कौटी जाऊँगी तुम सब क्लास को तेणु एक्सटेंड कीवर्ड ही यूज होची सिग्निफाइज करुँची प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर क्लास एक्सटेंड होची तुम सब क्लास को दिस इज कंप्लीटेड योर व्हाट इज इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट थैंक यू वेरी मच।